हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी पीपीटी स्लाइड? यस सर। अच्छा, पीपीटी स्लाइड फुल स्क्रीन पे आ गई है क्या? जी सर। पूरी स्क्रीन पे आ गई है? ठीक है, ठीक है, हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा, यस्टरडे हमने यहाँ तक पढ़ा था न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में ना। वी वर टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली वी वर स्टडिंग अबाउट द फाइबर्स and we talked about different classes of fibers in the last class. So today we are going to see its function, its role in the health. So fibers are not most of the time digested by our digestion system, but they are sometimes fermented. The fermented by the bacteria that are present in our intestine. So we are here somewhere here. The fibers are classified according to the soluble and insoluble fibers, and the in the soluble fibers. In the soluble fibers, there are some viscous fibers that make viscous material, and some are making the non-viscous material. Okay, you can see the classes. Yesterday we talked about the fructans, the xylem, the beta glucan, the pectins, the gums, the hemicellulose, the lignin, the cellulose, and the hemicellulose are there in the different classes of the fiber. So here is the important slide. So what are the benefits of fibers? Fibers actually protect us from the cardiovascular disease. Fiber protect us from the cardiovascular disease. If the proper amount of fiber is present in our food, it also protect us from the diabetes mellitus. So that's why it is said the brown flour is useful. The flour with bran is useful, but the white flour is not useful. That's why it is said the extract from the flour is not useful, that is used to make the naan, but the brown flour is useful, that protect us from the diabetes mellitus. And the appetite and satiety and the weight control is also regulated by the fiber. We feel satisfaction if the proper amount of fiber is present in our food. We don't feel much appetite if the fiber is present. If the fiber is not present, we will be hungry and we will be eating more and more, and ultimately we will become obese. And the GI tract disorders, some of the GI tract disorders is also solved by the fibers. So we are here somewhere in this table now, in this layout picture actually. So the viscous gel forming fibers help the gel distension. It fills our stomach, gastric distension. They also delay the gastric emptying. So our gastric is emptied very slowly under the presence of viscous gel forming fibers. Our stomach feels full for longer time and we don't feel hunger. Our appetite is controlled by the viscous gel forming fibers. If we see that they reduce the nutrient digestion, the fibers help the nutrient digestion, and nutrients are digested slowly and they provide the energy over a prolonged time. Who helps all these? This kind of fiber helps the reduced nutrient digestion. And we can see another function, reduced nutrient absorption. Nutrients are absorbed slowly and for to a prolonged period of time, and we feel energetic when we eat fibers over a prolonged period of time because the nutrient absorption is slowed down by the fibers. And the important thing here we can see the bile is a reabsorption is decreased. Is a reabsorption. Reabsorption is performed at the ileum, the last end of the small intestine, and this reabsorption of the bile salts are reduced and fats are dissolved into a proper way under the presence of fibers. Fiber is performing all these functions. Okay, so some of the blunted glycemic response, slow rise in the blood glucose happens because of this fiber. If the fibers are there, there will be a slow rise in the blood glucose. Okay, let me see who the students are waiting there, waiting. सर Yes, बोलो. स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं कि लेक्चर उर्दू में काइंडली कर दिया करें ट्रांसलेट. देखो, अपने इंग्लिश में, आपकी कोर्स इंग्लिश में नहीं है, सारे किताब इंग्लिश में नहीं है. मैं ऐसा तो बोल रहा हूँ, उर्दू में भी बोल दूंगा, कुछ ना कुछ उर्दू में भी बोल दूंगा, डोंट वरी.
आप उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया करें जस्ट ताकि ना वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। ओ भाई क्योंकि आपने इंग्लिश में होता इंग्लिश, है क्या होता है इंग्लिश में बताओ? सर, इंग्लिश में ये होता है कि आप जिस फ्लो से बोलते हैं ना तो कभी कभी समझ नहीं आता हमें। ओ भाई मैं तो स्लो बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी इसकी मौजूद होनी है, ठीक है? आप इंग्लिश तो समझने की कोशिश करो। और जो नॉन विस्कस फाइबर्स हैं, सॉरी भाई, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट फिर मांगना है, डिग्री जब कंप्लीट होनी है, वो किस चीज का दें फिर हम आपको? आपकी इंग्लिश बड़ी कमजोर है, आपको अडेप्ट होना है, आपको यूज टू होना है। अच्छा, नॉन आर लेस फर्मेंटेबल फाइबर्स, दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो हमारे जीआई ट्रैक के अंदर है, इज बिकॉज ऑफ नॉन आर लेस फर्मेंटेबल फाइबर्स, दे इंक्रीज, दे greater frequency of defection, it is increased by the fermentable fibers. अच्छा, अगर हम फर्मेंटेबल फाइबर्स की बात करें, दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। हमारे आवर इंटेस्टाइन हैव द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट आर सम useful and ferment the fibers, and the non fermentable fibers increase the growth of those bacteria. They are useful bacteria actually for us. Okay, because of this increased growth of bacterial population, there is an increase in the facial mass. ठीक है, हमारे जो स्टूल है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। कब? जब हमारे पास फर्मेंटेबल फाइबर्स होते हैं। क्या आप मुझे देख के तो नहीं पढ़ना चाहते? देख के आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, मैं अपनी वीडियो ऑन कर लूं, कोई और मसला तो नहीं है? कोई राय दे बच्चे? नो सर। देखो मैं तो लाइनें लगा लगा के इंटरैक्टिव लेक्चर देता हूं, कितनी फौरी जो मैं बोलता हूं वो लाइन भी साथ लग रही होती है, साथ हाईलाइट हो रहा होता है। मैंने तो आपके साथ इंटरैक्टिव लेक्चर लिए हैं और आप कह रहे समझ नहीं आ रही। ओके, सो द फर्मेंटेबल फाइबर्स शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोडक्शन को वो बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ा देते हैं? फर्मेंटेबल फाइबर्स। सो दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ फाइबर्स, these are viscous fibers, non or less fermentable fibers, and these are the functions of fermentable fibers. अच्छा आगे जी, food labels and the health claims. Diet low in fat and rich in high fiber food. ऐसी फूड जिनमें हाई फाइबर कंटेंट होता है may reduce the risk of certain cancers. Fibers reduce the risk of cancers. Okay, who? The high fiber food. If we talk about saturated fat and rich in soluble fibers, okay, may reduce the risk of heart disease. So this kind of soluble fiber reduce the risk of heart disease. And also diets low in total fat, saturated fat and cholesterol and rich in whole grain food and other plant food may help the reduce the risk of heart disease. Okay, if you eat the whole grain, it also reduces the risk of heart disease. Whole grain mean you take the wheat and you just make its flour and use it. This is called the whole grain. They also reduce the risk of heart disease. If you use the processed flour, that like the white flour, that increases the risk of heart disease. So these are all benefits of fibers. Reduce the cancer, reduce the risk of heart disease. Who is reducing? The fibers. The fibers are reducing. So what is the recommended intake of fiber for the men 19 to 50 years old? Almost total fiber 38 gram is recommended to take, and for age greater than 51, 31 gram. Okay, for women it is recommended 25 gram of fibers should be taken. For the children, this much fiber is taken. You can see this graph. For boys age 19 to 13 years, 31 gram of fiber is recommended in the food. In another recommended fiber intake, these are the details. Apple with skin. Apple with skin is containing soluble fiber that much and insoluble fiber that much, and total fiber it is containing 2.7 gram. 2.7 gram. Okay, it is taking 2.7 gram of fiber in 100 gram of apple. Okay, we can see mango is containing that much fiber, soluble fiber, and that much is 1.08 of the insoluble fiber, and total fiber is 1.76. 1.76. Mango is containing 1.76, and you can see apple is containing the highest amount of fiber. No, not apple. Like a plum with skin. Plum is containing the highest amount of fiber. No, not plum. Pear with skin. This one. These highest. Second and third one is the apple. These are containing the highest amount of fiber. If we see some food, some other fruits,
These are containing like cauliflower is containing 0.7 gram of the soluble fiber and 3.5 gram of the insoluble fiber, and total fiber is 4.2. And you can see different tables are here given. You don't need to memorize all this. So we finished the chapter fiber. Now we are moving to the small topic, very small topic, the functional foods, the foods that have some health benefits. एक मिनट जी जी वालेकुम सलाम जी हाँ जी बोलो जल्दी मैं क्लास ले रहा हूँ बोलो मैं ठीक हूँ हाँ मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना 20 मिनट बाद सकते मैं बताऊँ ओके okay sorry so we are now moving to the functional foods so flavonoid has the good health benefits flavonoids contains आपको आवाज आ रही बच्चों Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन भी नजर आ रही है Yes, sir. Yes, sir. ओके फ्लेवोनोल्स हैं फ्लेवोन्स हैं ठीक है एंथोसियानिन्स हैं आइसोफ्लेवोन्स हैं अदर फाइटोकेमिकल्स हैं दे ऑल हैज वेरी गुड हेल्थ बेनिफिट्स they all has like flavonols are present in the form of quercetin, camphorol, myristin, isohammentin and the rutin. These are all the examples of flavonols. And if we talk about the flavonols, catechin, epicatechin, epigallocatechin, 3-gallate, so these are all examples of flavonols, and these are present, for example, flavonols are present in green tea, pear, grapes, wine, berries, apple, okay, apple sauce, apple, once again apple juice, right? And you can see these kind of functional foods are present excessively in the fresh vegetables, actually fresh vegetable, leaf vegetables, and also the colored vegetables are containing high amount of flavonoids, colored fruits. Okay, now we are moving forward. So carotenoids, the precursor of vitamin A, is present somewhere in the tomatoes, pumpkins, squash, carrots, watermelon, papayas, guavas, and you can see terpenes. This is one of the you can say the bioactive compound. Terpenes are present in these kind of fruits. These kind of fruits you can see. You can just see these tables. You don't need to memorize these things. Okay, we are somewhere here. Flavonoids exhibit a broad spectrum of biological activities that may help activities that prevent the development of disease, For example, several flavonoids have the antioxidant activity. Antioxidant activity is similar to anti-cancer activity, and also they do have the anti-inflammatory activity. Who? The flavonoids. Okay, and vasodilator activity they also do have. They decrease the blood pressure. They dilate our veins, and this way our blood pressure is decreased. Okay. Antiplatelet adhesion activity they do have, anticoagulant effect they do have. Okay, some specialty, for example, in the nervous system, glial cells, okay, they inhibit the cytokines. The flavonoid inhibit the cytokines. They inhibit the cytokines by inhibiting the NF kappa B. And also some of the camphorol that comes under the class of flavonoids. All these are flavonoids. Camphorol is a flavonoid that has the antihypertensive activity. This camphorol has antihypertensive activity. Okay, that's all. So we talked today about some of the functions of fiber, first of all. Then we talked about some of the function in their function in the disease, how they prevent the disease. They prevent the cancers, they prevent the heart disease. Then we talked about what is the recommended dose of fibers. Then we talked how many fibers is present in which kind of food. And then we moved to some functional foods that have some important role in the prevention of disease. And we talked about one of the bioactive class of compound, that is flavonoids. Flavonoids have that much classes of compounds further, and among these flavonoids
these flavonoids are present in these kind of foods. We already saw, and then we talked what are the benefits of flavonoids in preventing diseases. They prevent the cancer, they prevent the inflammation, they prevent the high blood pressure, they prevent the cytokine storm, they inhibit the cytokines. When we suffer from like corona or dengue, if there is too much infection and damage to the cells, a lot of cytokines are released and body comes under stress. To release the patient from those stresses, flavonoids may be helpful. They inhibit the cytokines. And also the camphorol, that is one of the member of the flavonoid, prevents from the hypertension. It has the antihypertensive activity. Who? The camphorol. देगा सारे कंटेंट हमने कवर करने, कोई कंटेंट नहीं छोड़ना, ठीक है। और मुझे पता है कि टाइम कितना थोड़ा रह गया है। कंटेंट अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगी फिर। अच्छा, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 6. So chapter 6 is about the proteins. So what are the nutritional benefits of proteins? How the proteins are nutritionally beneficial to the body, how the proteins are digested. All these things will be studied in this chapter. So we are going to study this chapter from Advanced Nutritional Biochemistry 2013, its 8th edition, and the first author is the Grouper. Okay, why we need to study about the proteins in the nutritional biochemistry? Proteins are found throughout the body. Throughout the body, proteins are present. Over 40% of body protein is found in muscle, skeletal muscle. Our skeletal muscle are containing 40% of our total body's protein, and 25% of our body's protein is present in the body organs, in different body organs like liver, like stomach, like other spleen, like pancreas, and rest of the protein is found in the skin and blood. Skin and blood is making rest of the protein. So everywhere is protein, every function is performed by protein, and protein also do have very important nutritional role, because some of the essential amino acids cannot be synthesized by our body and has to be taken from outside. अच्छा, मैं चेक करना चाहता हूँ कोई लॉबी में मेरा वेट तो नहीं कर रहे, जरा स्टूडेंट मैं चेक कर लूँ जरा। अच्छा नहीं, सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा 33 40 के करीब है, चलो ठीक है। क्या नहीं हो रहा? अरे एक दो स्टूडेंट्स को मैसेज सर थे, मैंने अलाउ कर दिए। हाँ हाँ, अलाउ कर दो, आप खुद ही करते रहो यार, मुझे ना करना पड़े। शाबाश, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, खुद ही किए। अच्छा, so before we study about the proteins, we know already that proteins are made from amino acids, and there are 20 amino acids, and there are 20 amino acids. I took this picture from the Lehninger principles of biochemistry. There are 20 amino acids. They are distributed in different groups. There are 5 groups in which the 20 amino acids are distributed. You don't need to memorize, this is just to show you as an information, but you need to know about these things. Structural classification of amino acid is given here in the book. You already know amino acid must have one carboxylic group, one amine group, and one hydrogen, and one variable group. Variable group has been shown here in red. For example, glycine has a variable group R in the form of H, hydrogen, and alanine has methyl variable group, and the valine has this one, isopropyl variable R group, and leucine has this kind of R group that has been shown in red. So every amino acid has 3 things in common, actually 4 things in common: the alpha carbon, hydrogen, carboxylic, and amine. These 4 things are common, but 5th group, this one, 3 groups are common, alpha carbon is common, and the 4th group is different, and there are 20 formats of this variable R group. That's why there are 20 amino acids, and we can see these are amino acids with side chain containing hydroxyl group. Hydroxyl group is contained in the side chain of serine and threonine. These 2 amino acids are very important in the function of the protein. So third group is the class of amino acid with side chain containing sulfur group. Sulfur group is contained in the cysteine and in the methionine. But you should know cysteine has the sulfur group at the edge, you can say, but here sulfur group is in between. In between two, you can see methionine and methyl group. So these are sulfur containing amino acids. So the next class is, okay,
So the next class is amide group containing amino acid. These are aspartic acid, glutamic acid, okay, asparagine and glutamine. You should know small difference between glutamic acid and glutamine. Glutamic acid has this side chain, but glutamine has this one in place of this oxygen. This amine has been replacing this oxygen in the glutamine. In the same way, aspartic acid, and this is asparagine. And we can see here the basic group containing amino acids are, which are those? Arginine, lysine and histidine. Arginine, lysine and histidine. I may ask in the exam which are the basic group containing amino acids. I can ask which are containing the aromatic ring. So there are three amino acids containing aromatic ring, which those are phenylalanine, tyrosine and tryptophan. These three are benzene ring, aromatic ring containing amino acids. So next we are moving amino acid. Amino acid is proline because its amine group is not present, but imine group, imine group is present. This is called the amino acid. Who? The proline. Next is, okay, that is containing SS. This is cysteine, okay, not cysteine. Hydroxy, lysine. This is a less common format that is present. Okay. Now we are moving to discuss more properties of amino acids. These are neutral amino acids. Neutral amino acids are alanine, asparagine, cysteine, glutamine, glycine, isoleucine, leucine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, and valine. These are the neutral amino acids. And there are some charge containing amino acids are aspartic acid, glutamic acid, arginine, histidine, and lysine. They do have some net charge. If we move forward, polar and non-polar amino acids. Polar amino acids are asparagine, cysteine, glutamine, serine, threonine, and the polars are arginine, lysine, histidine, glutamate, and aspartate. You can see relatively non-polar amino acids somewhere here. Okay, some amino acids are essential that are required to be obtained through the diet. Our body cannot synthesize those essential amino acids. We have to take through the diet, through the food. Phenylalanine is there, valine, threonine, methionine, tryptophan, histidine, isoleucine, leucine, and lysine. These are the essential amino acids. Sometimes it is called, there are 10 essential amino acids, but it has been written 9 essential amino acids. But it's no problem, you can follow one book. Okay, some conditionally indispensable amino acids and their precursors. Okay, tyrosine, cysteine, proline, these are conditionally indispensable. Like नागुजीर, indispensable का मतलब होता है नागुजीर, इनके बगैर गुजारना हो, लेकिन under some condition they are required. अच्छा, हम आखिरी ये स्लाइड पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी. ठीक है, हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. जब हम फूड, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट मुंह से खाते हैं या हम ग्लूकोज खाते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन आपको पता है कि और डाइजेशन स्टोमक में नहीं होती, क्योंकि एमएलएजीज जो है ना लो पीएच पे काम नहीं कर सकते. जबकि प्रोटीन का कुछ इस तरीके का सिस्टम, जब मुंह से खाते हैं, चबाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती मुंह में. तो जब स्टोमक में जाती है ना, स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक सेल्स रिलीज द हार्मोन गैस्ट्रिन. When the proteins enter the stomach, the gastrin is released, which enters the blood, causing the release of gastric juice. जब हम प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है स्टोमक में. गैस्ट्रिक जूस में ना HCl मौजूद होता है. गैस्ट्रिक जूस contain HCl and that decreases the pH of the stomach. दूसरा स्टेप क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, इन्होंने भी कह दिया है डीनेचर्स प्रोटीन्स को डीनेचर करता है. ना सिर्फ ये डीनेचर करता है बल्कि एक और भी काम ये करता है, ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, यानी कि प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं. कोई भी चीज अगर आपने डाइजेस्ट करनी है, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में पहले तोड़ना पड़ता है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, उसको तोड़ता है, डिनेचर करता है बेसिकली कहना चाहिए. और पेप्सिनोजिन जो है ना HCl की मौजूदगी में, लो पीएच की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. ये पेप्सिन लिखा हुआ है.
पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन जो है ना फिर हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को, पेप्सिन हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा, पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती हैं एंड काज रिलीज ऑफ हार्मोन सेक्रेटिन एंड कोलिसाइटोकाइनिन, ये दो किस्म के हार्मोन जो है ना ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। ठीक है, जहां जहां पे जो फंक्शन हो रहा है वहां पे तीर का निशान लगा हुआ, स्टेप 1 और 2 जो है स्टोमिक में हो रहे हैं, और ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या हो रहा है, कोलिसाइटोकाइनिन हो रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से एंट्री हो रही है, समवेयर हियर एंट्री। तो चौथा स्टेप क्या है, यहां से एंट्री हो रही है। अच्छा, these hormones stimulate the pancreas to release prohormone and bicarbonate into the intestine। अच्छा, ये जो है ना कोलिसाइटोकाइनिन जो है ये क्या करते हैं, पेंक्रियाज से जो है ना ये बाइकार्बोनेट्स रिलीज करवाते हैं, बाइकार्बोनेट्स रिलीज करवाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है, और वो एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन जो बाइकार्बोनेट जो है ना पेंक्रियाज खारिज करता है उससे उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज की जाती है, जो भी स्टोमक से आपके पार्शली डाइजेस्टेड आ रहा है फूड। ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवें स्टेप में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैंक्रियाटिक प्रो enzymes are converted to active enzymes in the small intestine. These enzymes digest polypeptides into tripeptides। ठीक है, ये जो प्रो एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, ये एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहां पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद ये पेप्टाइड्स को मजीद डिग्रेड कर देते हैं। ये पांचवा स्टेप है। ये हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स की। और छठे स्टेप पे क्या होता है, इंटेस्टिनल एंजाइम्स इन द ल्यूमन एंड द ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विद इन म्यूकोसल सेल्स कंप्लीट द प्रोटीन डाइजेशन। ये जो इसके फंगेटिव किस्म के होते हैं ना, सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, अंदरूनी सरफेस जो होती है वो क्या करती है, फिर इसको फुली डाइजेस्ट कर देती है प्रोटीन्स को, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, ये 6 स्टेप हैं जो हमने पढ़े हैं आज तक, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा कोई बात है तो करनी तो कर लो। यहाँ पे देखो पेप्सिनोजिन लिखा हुआ है, ये HCl की मदद से एक्टिव होता है और पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। एक्टिव एंजाइम फॉर्म कौन सी है, पेप्सिन है। इसकी जगह कौन सी है, स्टोमिक है जी। मोस्ट अमीनो एसिड इंक्लूडिंग एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक ल्यूसीन मेथियोनिन। ठीक है, इनकी सबस्ट्रेट क्या है इस एंजाइम की, ये वाले अमीनो एसिड है, इनको ये कर सकता है, तोड़ सकता है। एंड प्रोडक्ट इसकी क्या बनती है, पेप्टाइड बनते हैं। अमीनो एसिड नहीं बनते, पेप्टाइड बनते हैं, यानी बड़ी प्रोटीन ने टूट के छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरह ट्रिप्सिनोजिन है। ठीक है, ये एंटेरोपेप्टिडेज और ट्रिप्सिन की मौजूदगी में ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म जो है ट्रिप्सिन है, और फिर ये इंटेस्टाइन में ये होता है, एक्टिव होता है, और ये बेसिक अमीनो एसिड को इसकी सबस्ट्रेट है, बेसिक अमीनो एसिड पर ये एक्ट करता है। ठीक है, और स्मॉलर पेप्टाइड बन जाएंगे, सम फ्री अमीनो एसिड भी बन जाएंगे इससे। इस तरह काइमोट्रेप्सिन है, काइमोट्रेप्सिन भी इंटेस्टाइन में होता है, ये एरोमेटिक पे एक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एक एंजाइम है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन की मौजूदगी में होता है, और ये इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अच्छा चलो बस यहां तक Excuse me, काफी sir. है।